Who is the Chief Minister of Gujarat? Anandiben Patel, best. Well, that's a great answer. Vijay Rupani. Vijay Rupani. Vijay Rupani. Person दोबारा स्टार्ट करो सोचने दो वो है ऋषभ भाई रूपानी है अपने काका विजय रूपानी So, वो आपके काका लगते हैं. हम तो Okay, बोलते हैं great, प्यार great. से अपने ही है वो हाँ हमारे ही है जैसे वो बापू लगते हैं महात्मा गांधी. हाँ वही सब Nice. And अपनापन बहुत okay, so moving on to the next question. What is the full name of Narendra Modi? नरेंद्र जी मनोहर लाल मोदी आई गेस दामोदर Narendra Damodar Modi. फ्रॉम डी एंड इट्स समथिंग दामोदर कोई दास टाइप का कुछ बीच में वर्ड है नहीं पता नरेंद्र मोदी भाई मोदी. Narendra K. Modi. Narendra K. Modi. And what does K stand for? That I don't know. But you know that there is a K in between. Okay. And moving on to the next question. Is Narendra Modi married? Divorced. कंट्रोवर्सी है उसका तो थोड़ी. कंट्रोवर्सी है बट You guys are sure that he's not married? इन हिज इलेक्शन जो भी सबमिट करते हैं No. Yes. He You is, can- but he is divorced. He is married, but he is divorced. Child marriage. Child marriage. Fine. Not child marriage, right? Yeah. But it is a child marriage. No, you guys can decide between yourselves that Not a child marriage. Not a child marriage. He married when he had become an adult, right? no. Yes he is married but he left his he wife was after married 1 at year. very early age of around 12-13. He is a bachelor. He's not married. Okay. From which constituencies did Narendra Modi contest the 2014 Lok Sabha elections? I will just give you a hint. Like there was Arvind Kejriwal. Okay, yeah, Varanasi. It's my native actually. Okay. I don't know. I'm really bad at this. I don't know. This is the first It was Banaras. It was in Banaras. I think you should choose another person. I'm not right. Baroda, Varanasi, and two only. I know. Two only. Baroda, Varanasi, and I know only two. okay, but there are many more, right? बड़ौदा एंड नहीं बनारस नहीं उधर कहीं पे है ना कौन सा है मुझे नहीं याद आ रहा वाराणसी तो मुझे नहीं याद Is it Varanasi or Banaras? बनारस Not Varanasi. नो Are you sure about it? यस He contested from two constituency, one from Baroda and one from Varanasi. Now he has left Baroda and Varanasi is his official constituency. What will happen to India if Rahul Gandhi joins BJP? खींचे I don't think Sonia Gandhi will allow that anyway. and I don't think कि BJP will allow Rahul Gandhi to join BJP देखते हैं I don't hear that news. So that's I never a heard that news. पता नहीं Okay, so I don't know about the Congress BJP stuff. Ganja ganja. Ganja ganja. Rahul Gandhi cannot join. I mean, there's nothing left in Congress then. so he has to join BJP, right? If he joins BJP, then the little bit scope of Congress is also dead. And how is Rahul Gandhi related to Mahatma Gandhi? Not even related. They are not related. we know that They are not related. So what do you mean by we know that much? Question mark. Mahatma Gandhi gave her surname to Indira Gandhi. Indira Gandhi is her grandma.
दिस इज हाउ राहुल गांधी रिलेटेड टू महात्मा गांधी. भारत इस प्रकार से असहायता का अनुभव करे, इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता. हमने उनकी फैमिली हिस्ट्री स्टडी करी. फैमिली के मेंबर तो है ना कौन? गांधी जी, राहुल गांधी के. हो सकता है. सब दूर दूर से रिलेशन. रिलेटेड तो है ही क्या सही. Grandson or something of Jawaharlal Nehru. Yes. Not in relation. Grandson of. Not in relation with. There is no relation. Rahul between Gandhi is the grandson of Jawaharlal Nehru. Jawaharlal Nehru. Just surname, nothing else. So they are not related. They just have a common surname. Yes, just that. Okay, thank you so much. All the best for your competition. Thank you so much. I don't know. But you know, right? They both are related, like grandfather or something. Yeah. Probably great grandfather. But they both share Gandhi, Rahul Gandhi, and Mahatma मैं Gandhi. भी जैन, आप भी जैन भाई थे. वाह मोदी जी वाह, वाह मोदी जी वाह. Well, I will give you the correct answers. Vijay Rupani is the current Chief Minister of Gujarat. And he stood from Baroda and Varanasi. He is married. He stated in its affidavit in 2014 election. And that was a rumor. That was not a correct news. That Rahul Gandhi is going to join BJP. And the last question, there is no blood relation between. That's an amazing answer. Okay. Thank you so much. Hi guys. So I believe आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा. और अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें. मोदी भक्त एंड आपना आर्ट्स एज वेल एज राहुल गांधी के फैंस के साथ शेयर करें. और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. यार आप सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो? इट्स जस्ट वन बटन डाउन है. आपको बस सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना है ताकि आपको मेरे जैसी वीडियो कोई भी नया आपको सीधा मेल में अपडेट आ जाए. प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स से भी सब्सक्राइब करवाएं. इट्स इम्पॉर्टेंट ताकि मैं और ओरिजिनल कंटेंट आगे बनाता रहूं. एंड स्पेशल थैंक्स टू हर्षल मोदी जिसने मेरी वीडियो की वीडियोग्राफी की है. तो अगर आपको वीडियोग्राफी अच्छी नहीं लगी हो तो गालियाँ उसको दें. प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएं कि मैं आगे कौन से क्वेश्चंस लोगों से जाके पूछूं. एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड कीप सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल. थैंक यू सो मच गाइज.